we've had the most amazing time working with all of them. Like I said, Varun used to genuinely keep calling me. I said, "To kaam karna, don't worry about the set now. This is an important song." He was genuinely concerned so many times, and it's great to see actors who are just not looking at their performance, but they're also concerned holistically about the film and where it lands. And I think all of these people are, the younger generation is just so much more cognizant of all these things. They understand it, and and they're all friends. They're friends, they're actors, they all have done enough work now to understand how things are evolving, and they are as concerned as us. So genuinely, it's not been a concern. And Sunny Sanskari is again all of these bigger, better, more fun, more entertaining, and we are so excited. So please watch the film and give it a lot of love. So Shashank is firstly family. I have to say, he's been 10 years with us. He's given us some of our most memorable films, like you all know, Humpty Sharma, Badrinath Ki Dulhania. Then we had Govinda Naam Mera. Now, of course, Sunny Sanskari. All his films have been fresh, Dhadak, appealing, entertaining. Dhadak also, of course. Sorry. Apologies, forgot. And he's produced 3 films with us, so he's actually a veteran now in the company. आई थिंक बहुत सिंपल रीज़न था, हमें कैची टाइटल चाहिए था. कहानी 2 किरदारों के बारे में है, और जैसा कि है कि अब आप पूछेंगे कि जेम्स बॉन्ड का नाम जेम्स बॉन्ड क्यों है, क्योंकि इट्स अ फन नेम, इट्स अ कैची नेम. आई थिंक दैट वाज द आइडिया. इट काइंड ऑफ कन्वेड द स्टोरी वेरी वेल ऑफ कि ये 2 किरदारों की एक लव स्टोरी है, उनके बारे में है, साथ में फैमिली है, एंटरटेनर है. तो और इसमें ज़्यादा हमने ऐसा कोई डीप सोच नहीं था. इट वाज जस्ट टू हाईलाइट द कैरेक्टर्स एंड हैव फन विद देम. इफ द नेम ऑफ कैरेक्टर्स एंड द टाइटल हैज़ अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन हाउ यू काइंड ऑफ इंटरप्रेट इट. बिकॉज DDLJ अगर आप पकड़ेंगे तो आई थिंक राज और सिमरन, वो 2 नाम लेजेंडरी हो जाते हैं, तो कैरेक्टर के नाम से बहुत फर्क पड़ता है. आई स्टार्टेड दिस जर्नी एज नॉट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, कमिंग फ्रॉम नासिक, ट्राइंग टू मेक. I've been blessed to work with good people. We all have to collectively take the onus. I think by pointing fingers at each other, we are dividing ourselves further. किसी एक प्रोड्यूसर की गलती नहीं है, किसी एक राइटर की गलती नहीं है, किसी एक डायरेक्टर की गलती नहीं है. सिस्टम ऐसे होगा. I think if we all collectively come together and say, hey, I got your back, you got my back, I think we need to preserve the integrity of our industry. I think by talking too much about negative about our industry, we are opening ourselves to more criticism and making ourselves soft targets. We need to protect whatever the problems we also have. We need to be behind closed doors and solve it. It's like a marriage, right? When you're a marriage, you don't want to wash your dirty linen in public. Similarly here, I feel if we can all sit together, I'm sure we can solve things. We don't need to point fingers at each other, because then everyone starts pointing fingers at us. I think as an industry, we just say, hey, it's our problem, we'll deal with it. Whether it's money, whether it is content, whether it is actors, directors, we will sit, we will handle it. And I think if we build that integrity within us, and all of y'all are the media who actually talks about us the most. So if the media collectively we build integrity, because we are faces, we are standing here. There are so many jobs dependent on one film. There are so many technicians, spot dadas, lightmen. I think we need to build our integrity for them as well. That we need to say that, hey, we are not soft targets. We are people who are putting our life and soul into a film. And all these jobs are impacted if one film does not get made. So I think if we can have integrity collectively, I think we should showcase that as a इंडस्ट्री. रिवेंज है, मस्ती है, पर सेलिब्रेशन स्टाइल में है, डार्क नहीं है. तो और जिस सीजन में हम आ रहे हैं, दशहरा के दिन आ रहे हैं, 2 अक्टूबर के दिन आ रहे हैं, पूरी दुनिया फेस्टिव मोड में होगी, तो वहां पर एक रिवेंज का तड़का भी है, पर खुशी का माहौल है, हैप्पीनेस का माहौल है. तो आई थिंक दिस टैगलाइन just kind of captured both the moods completely. और दुल्हनिया का पार्ट नहीं है, मेरी जो स्टोरी टेलिंग का एक स्टाइल है उसका पार्ट है. और मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं लोगों को एंटरटेन कर सकूं, उन्हें हंसा सकूं. और आई थिंक आज के माहौल में हंसना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. लोगों को थिएटर में आके एंजॉय करना, हंसना. तो जिस हिसाब से मेरी स्टोरी टेलिंग रही है, एक फैमिली एंटरटेनर, लोग मस्ती कर रहे हैं, शादी का एक माहौल है. आई थिंक आई गॉट लकी इन मैरिज. तो मुझे ऐसा लगता है सबकी शादी होनी चाहिए, और यहाँ पर स्टेज में कुछ लोग हैं जिनकी शादी होनी चाहिए, तो बस यहीं से शुरुआत हो रही है. और वरुण के साथ एक्चुअली कभी फील नहीं होता है कि हमने साथ में काम नहीं किया है, बिकॉज इवन व्हेन वी वर नॉट वर्किंग टुगेदर, वी आर बेसिकली कॉलिंग ईच अदर अप एवरी डे. और वरुण की एक खासियत है, वो जो भी फिल्म शूट कर रहा होता है, वो शॉट खत्म करने के बाद मुझे फ़ोन करके फिर परफॉर्म करता है. तो वो जब आउटडोर शूट पे जाता है, जैसे वो आई रिमेंबर बवाल की शूट के लिए कहीं गया था, ही लैंडेड फ्रॉम द एयरपोर्ट, मैं आ गया हूँ, मेरे घर आ जा, हम लोग घर पे थे, देन ही परफॉर्म द एंटायर स्केड्यूल इन फ्रंट ऑफ मी.
तो हम लाइक बॉस ये क्या हो रहा है, तो ये हमारा रिश्ता है. तो कभी ऐसा फील नहीं होता है कि वी हैव नॉट वर्क टुगेदर. Besides movies, we are also friends. Our families know each other very well. तो there was never any discomfort or that. तो as I said, इसका evolution मैं रोज देख रहा था बिकॉज ये रोज परफॉर्म कर रहा होता है. अभी हाल में बॉर्डर शूट कर रहा था तो वहां से फोन कर रहा था, आज मैंने ये किया सनी पाजी के साथ, आज मैंने ये किया दिलजीत पाजी के साथ. तो ऐसे ठीक है यार, मेरे को भी को प्रोड्यूसर बना दे इस फिल्म में बिकॉज मेरा भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है. एंड आई थिंक स्पेशली जानवी, बिकॉज जानवी को मैं पहली बार जब उसके साथ काम किया था, हम लोग धड़क पे साथ में काम किया था, और इतने वक्त के बाद आफ्टर सो मच टाइम आई गॉट टू वर्क विथ हर, एंड ऑफ कोर्स शी हैज हैड एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो इट वाज समथिंग न्यू फॉर हर बिकॉज दिस जॉनर इज नॉट समथिंग शी हैज डन a lot with. So actually that's where Varun and my combination, and because we have done so much work together, hamari thodi bahut initial choices of films are also very similar. We enjoy watching that kind of films. So it really helped because we can get into a room, start rehearsing together, and push Janvi to kind of express her side. And I think when people see the film, they'll realize the comic side she has and the commercial so-called एक सुर होता है commercial cinema का, और कभी-कभी it takes time to just let it come out. So I think I was really impressed by that, and I think just collaborating, we've always rehearsed a lot. हम लोग हमेशा बहुत rehearsals करते हैं. कभी-कभी एक नोशन है कि कॉमेडी फिल्म हो या इस जो जॉनर की फिल्म हो, इसमें रिहर्सल की ज़रूरत नहीं होती है, बट इनफैक्ट इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बिकॉज इसमें टाइमिंग ऑफ गया तो आपका जोक लैंड नहीं करता है. तो आई थिंक दैट एक्सरसाइज वाज ग्रेट फन. I think it's very important, like heading into the future, that you put producers first now. It's quite clear, I think, in the landscape of how cinema is performing now, how OTT prices are fluctuating, satellite prices are fluctuating. It's so important that you put producers first, because ultimately they are the ones with the biggest risk appetite, or the biggest risk that they're taking. So I think it's a bit going back to how things were maybe in the past, how people used to make films. Hopefully nobody has to, go to those lengths like in the past, because there are horror stories from then also. No, there are. I've seen it in my childhood. I've seen friends' houses lose houses. I'm not lying about this. So I genuinely feel that moving ahead, it has to be producers first, and people have to make a film together. They have to make a film together, and that's quite easy when you're working with Shashank or with Dharma, and especially Karan. Dharma is home for me. It'll always be. So when I work in a film which is produced by Dharma, I honestly feel like it's my film. I'm making it. So it doesn't matter at that time if there's a van or there's no van. If there's I also want to say this on record that Dharma does take care of the actors in the best way. Only once you work with Dharma, and then when you work outside, you realize that shit, they took so much care of us. They really support talent, regardless of who stands. Nothing. There's a lot of equality. And not just talent. I think every technician, also, everyone on set. These conversations happen that the hero has a bigger room or the heroine has a smaller room or this and that. In Dharma production, that's I think Entourage का issue वहीं start होता है जहाँ पहले से ही ये होता है इसको देना है और उसको नहीं देना है. That is where I feel वो एक्टर्स में एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, इसको अंतराज मिला उसको नहीं मिला. यहाँ पे आई थिंक सबको बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया. Where is Karan Johar, sir? देखिए, करण जौहर जी को आप बर्थडे पे देखते हो, मुंडन पे देखते हो, शादी पे देखते हो, किसी के सुहागरात पे देखते हो. तो हमने बोला कि आज उनको एक ब्रेक दे देते. बट द ट्रूथ इज दिस, दैट आई थिंक ही इज टेकन अ डिसीजन. आई एम सेइंग इट आउट लाउड, आई एम पुटिंग इट आउट. He's taken a decision that now, henceforth, कि जो उनकी फिल्में लॉन्च होगी, he will not come for the launches because he wants to let the team get all the limelight, because उनको लगता नहीं, ये सही भी है कि जब वो आते हैं तो पूरा मीडिया उनके पीछे पड़ जाता है. So henceforth you won't see him, and if he comes for any other film now, then make it a controversy. When we started this film, he was very, very, very unwell. He had chikungunya. And he was running a temperature. रोज वो ड्रिप लेते थे. He would come down and he was literally on a wheelchair. And he has shot a lot of portions of the film while recovering from his illness, and hats off to that dedication, Shashank. मेहंदी होती है, संगीत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. So according to the screenplay, things are moving, तो ये बिजुरिया जहाँ पिक्चर में आती है, according to the screenplay we needed this part. Then Panwadi comes somewhere. We have another song, Ish Manzoor. We have a love song. So बहुत गाने हैं वहाँ पे. मुझे लगता है जो संगीत होता है वो हमारे देश को जोड़ने का काम करते हैं. क्योंकि जैसे आप पंजाबी म्यूजिक देख लो, अभी आपको पंजाबी समझ में आती है या नहीं आती है, बट आप इंजॉय करते हो, हर किसी आर्टिस्ट के गाने इंजॉय करते हो. सेम विद भोजपुरी म्यूजिक. एंड ये लोग इतने बड़े स्टार्स हैं,
केसारिया का नाम लिया था आपने एंड Yeah. पवन मासूम सिंह शर्मा जी जी. का Yeah. मासूम मासूम शर्मा जी फ्रॉम हरियाणा एज वेल. सो दे ओनली ऐड टू अस एंड हम लोग बहुत ग्रेटफुल है कि उन्होंने हमारे पिक्चर में गाने के लिए अग्री किया. एंड पनवाड़ी लाइक आई थिंक एवरीवन हैज कॉट ऑन टू दिस सॉन्ग. Yeah, we इट्स all लाइक द हार्ट ऑफ आवर सॉन्ग एंड आई थिंक पूरी कास्ट है वो गाने में. So you get to see Rohit shirtless also in that song eventually. 100%. I think if you see my family's association also with Bhojpuri cinema, if you remember, there was a song in Raja Babu only called Sarkailo Ghatia, Jhada Lage. So तब से at least my dad has always had a liking towards that genre of music. You know, let's UP wala ठुमका लगाओ. So always he's had that thing, and I kind of love it as well. मुझे तो बहुत मजा आता है. एंड मैं बहुत टाइम से ये करना चाहता था किसी फिल्म में. एंड लकीली वी गॉट द अपॉर्चुनिटी विद पनवाड़ी एंड दादा अग्रीड. वी वर रियली हेल्प्ड बाय असीम लियानी हु इज अ म्यूजिक सुपरवाइजर एट धर्मा. ही हेल्प्ड अस गेट और दैट. गणेश मास्टर जी की कोरियोग्राफी है तो मतलब वो तो कमाल है ही. So there was this song जब when I first fell in love with Natasha, there was a song by Mark Anthony called "You Sang to Me." So I played that song after like, so she was wondering कि यार इतना पुराना गाना suddenly why did you play and stuff like that. And I was trying to be in the pool while we were in a pool and मतलब मैं नीचे जाके ऊपर आके देना चाहता था. बट मैं ट्राई कर रहा था 2-3 बार. तो मैंने मेरे दोस्त को बोला क्यू इट. नाउ आई वेंट डाउन. बाय द टाइम आई केम आउट शी हैड गॉन आउट ऑफ द पूल. So then I came out and it was not as filmy as it seems, but I kind of just went on one knee and I guess she said yes. अभी तो रिलीज होने वाली है तो मैं हर संस्कार फॉलो करूँगा. बट आई डोंट नो इफ इट्स अ संस्कार और व्हाटएवर, बट बचपन में जब मैं स्कूल जाता था तो सुबह सुबह ऑब्वियसली जब नहाना पड़ता है तो ठंड लगती थी. तो मैं मदर वुड मेक मी चांट ओम भूर्भुवः. So that I still follow every time if I'm getting scared about something, if there's something big coming up. So वो मैं हमेशा follow करता हूँ अभी. Technology I think does come with responsibility. It can be really helpful, but it can be really misused as well. Right now we are all having fun with it, but it can. So I feel there will need to be some law and regulations surrounding it, especially so that at least actors and artists don't start getting misused. Their rights don't start getting misused, because we can reach a period where you don't need actors at all. Then you can just create. So I think actors have to come with an X factor to deliver, and if you have that X factor, then you have to safeguard it. So I believe you should safeguard it. Dharma's like family, and they take care of all of us so much, not just us, but even our entire team. I have to say one thing though, he is so overcognizant of all of these expenses. Aapne Panwadi गाना देखा ही होगा ना, and I think that was our biggest song, our biggest set. So before every shot, Varun would come up to each of us and say, पता है कितना डाला है इस गाने में, पता है कितनी की set है, now kill it. तो ये pressure में हम नाच रहे थे पूरे दिन. तो हाँ, that's how responsible he is, and he's inculcated that in us also now. I guess was a romantic comedy, but this is a proper family entertainer. Of course there's romance and comedy and all of that, but it's a front-footed family entertainer. लेकिन क्या lessons मैंने दोनों किरदारों से सीखे हैं. मैं तुलसी कुमारी के बारे में बात करती हूँ. एक्चुअली मैंने यही सीखा है कि किसी की शादी पे जाके उसे तोड़ने की कोशिश मत करो. पाप लगेगा. प्लानिंग नहीं, अभी पहले मेरी प्लानिंग अभी सिर्फ फिल्मों को लेकर है. शादी की प्लानिंग के लिए बहुत टाइम है. बहुत सारी क्वालिटीज़ चाहिए मुझे. सबसे पहले तो संस्कारी होना चाहिए, दूसरा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, और एपेटाइट बहुत बड़ा होना चाहिए. I mean, I think not just for actors, I think for every technician I've seen over the course of the last couple of months even, before when you'd get a narration or you'd come in for a meeting, it would take a lot of time before you see storyboards or you do physical look tests so you know what the zone of the film is, the character. But right now, in a second, they can show you an image of you being the character. They can show you exactly what the film is going to look like. They can do renders of... No, but more than misuse, my concern is that there's so many jobs that would have taken, I guess, X amount of more time to deliver these variables, these sketches, and maybe would have added something more personal. But right now, more people are, I guess, relying on the technological aspect of it, which I guess might be more financially, monetarily conducive. But I guess you can say I'm old-fashioned, and I really want to preserve what a creative human being has to offer. I don't know what the technicalities or the legalities of how to go about that is, but I know
when I see even right now on social media how there are so many AI images against my will being circulated by mainstream media portals as legitimate images, and I think maybe me and you can tell that it's AI, but the common man will think कि हाँ ये तो ये पहन के पहुंच गई, so many, ये I तो mean- इसके which is, so I don't know what the protocol is. It is all kinds of honor. Honestly, I think it is such a big honor to get a shot as iconic as that. And I have Shashank sir and the entire team of Dharma to, give me that. I think it is going to be one of the most special shots ever. It is also a very, very expensive shot. So thank you, sir, for that. No, but I feel absolutely incredible. And I also got a lot of love for it. So I'm very, very happy. Thank you. जब मौका मिलता है अच्छी स्क्रिप्ट आती है, और ये फिल्म तो लिटरली शशांक जो है इन्होंने कॉल किया, वरुण के साथ मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर रहा था और शशांक ने कहा एक रोल है यार तू करेगा, मैंने कहा डन। तो मैंने तो स्क्रिप्ट सुनी भी नहीं थी, दे आर प्रूफ, एंड उन्होंने कहा ये रोल है तू कर रहा है, मैंने कहा डन, एंड उसी तरह काम किया।